So we have one class that is second class. Okay. So I'm going to create one method. Method name is second method. So I've created one static method. Okay. If I'll write system.debug, so yeah, what I'm doing, I'm going to print the value of name and I'm getting the error. So variable doesn't exist name. Let me create another variable. Okay. So can we call this some now what I'm doing? I'm going to call the second method. How we will print the second method. Okay. So first what I'm doing, I'm going to create one instance for the class. Second class is equal to new second class. Then sc dot method name. ठीक है. पहली लाइन से क्या होएगा? What will happen from first line? Constructor will execute. From second line, what will happen? Non-static method will execute. And if you want to execute static method, how you will execute it? Call the class name dot method name. So we have to write class name dot method name. So which method you want to execute, write it. So it's a way to execute static method. Okay. So static method will be execute and non-static method will be execute. And from So, first sir, line, constructor will execute. Yes, yes. so sir, there's no need to be a object in the static method. Yeah. In static method, if there is only one static method, you don't need to create the reference variable or you can say object for the class. You don't need to create the object for the class. If method is static, if method is non-static, that time it's mandatory to create the object for the class. Okay. Now I'm clicking on execute button and going to open debug file Jan Chan name in static method Koranso. I'm getting the data of Koranso. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है, कैन वी कॉल नॉन स्टैटिक वेरिएबल इन स्टैटिक मेथड और नॉट? There is one variable and it's non-static variable. Can we call it or not? No, sir. Because Okay.
Just before this demo, it shows an error. That's all. Yeah. So non-static variable, we can't call it in static variable, in static method. Okay. Okay. Answer is no. Fine. Next question. Can we call static variable in st non-static method? Is it possible? Okay. So answer is yes, we can call it. Next question. We have one method. Okay. It's a non-static method. So can we call non-static method in static method or not? Any idea? Okay, so no problem. First, I'm gonna teach you the difference between static and non-static. After that, we will learn where we will use it. This thing. Okay, can we call static and non-static or not? So first, what I'm doing, I'm going to create some you can say variable. So public integer a value. There are two variable a value and b value, and I'm also assigning some value. Default value is 0, and second public, and second I'm gonna create static type variable. So when you will create the variable can also be static and non-static. Method can also be static and non-static. Okay. So I have created two variable. Now what I'm doing, I'm going to create one method, that is add method. So when you will call the add method, what I'm doing, I am adding the value in the variable. There is one variable a value. I am going to add the value. How much value I am adding? In this variable I am adding 10 value. ठीक है, जब भी आप ऐड मेथड ऐड फंक्शन कॉल कराओगे 10 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ए वैल्यू में. सेम थिंग्स आई एम डूइंग इन v value. I am calling v value variable and I am increasing the value of v value variable. ठीक है, तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में क्या डिफरेंस है? इन स्टैटिक memory will create only one time. In static variable memory will create only one time, but if it is a non-static variable, in non-static variable memory will create multiple time. So whenever you will call non-static variable, whenever you will create the object for non-static variable, what will happen? New memory will create. Okay.
So it's the difference. I'm going to we will I'm going to teach you in practical way. So what I have done, I've created one class. Now I'm going to call it. You don't have permission to execute attacks. Okay, now I'm going to execute it. So if you want to execute the class, simple write the class name sc, write the method name which you want to execute. So I'm executing add method. So when I will execute the add method, I want to check the value of a. So I'm writing system.debug a value. ठीक है. So first time we are executing it, I'm checking the value of a. So how we will write it, how we will access the a value variable. So we will write s1 because a value is the non-static. If you want to access the non-static variable and method, you have to write the object reference name. Okay, object reference variable name dot variable name which value you want to access. Now again I am writing system.debug and I want to access the value of v. So I'll write sc dot v value. If we write directly A value, to it's showing error. No, we have for it's the non-stat it's the static. For static we have to write the class name. For static variable and method, we will write the class name dot variable name. ठीक है. For static variable, for non-static variable, and I am also writing one debug system dot debug first time executing. ठीक है. Now what I'm doing, I'm clicking on execute button. Line number 14, column 4. We have not Second class. Okay. Statistical exam. Static example sc is equal to new. Yeah, I'm going to 10. print it debug only. So what I'm getting in a value variable, I'm getting 10. In v value, I'm getting 10. ठीक है. कोड यहाँ तक सही है सब कुछ. यहाँ तक किसी को कोई डाउट अभी तक? जो मैंने कोड अभी तक लिखा है किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. ठीक है. अभी यहाँ से ये कंफ्यूजन दूर नहीं हुई स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है, वो कंफ्यूजन आगे दूर हो जाएगी. ठीक है. बट जो भी मैंने कोड लिखा है, कुछ ऐसी लाइन जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, है ना मैम? No, sir, all clear. गुड. Okay, so yeah, when we will call it first time, so we will get same data. Now what I'm doing, again I'm going to create one reference variable for this class. Okay, and it's second time I'm writing second time executing. So system.debug, I want to print the a value. So a value is equal to write the object reference name sc1 dot a value. Now system dot debug, again I'm writing v value, and v what is the
You can say v value. It's the static or non-static variable. So it's the static variable. How can we access the static variable? With the help of class, we can access it. So we have to write the class name dot method name. Sorry, variable name which you want to access. So I want to access v variable. Now I'm going to save it. Okay. So first, when we are executing first time, a value it was 10, and v value what it was 10. Okay. Any idea when I will execute this code, what I will get in a value? 20. 10. A value is 0 0 and B value and is B 10. value is a 10. Correct. A 0, B 10. A value 10, B value 20. ओके, ठीक है, देख लेते हैं क्या मिलता है। आई एम क्लिकिंग ऑन एग्जीक्यूट बटन। 0 and 10. सो अकॉर्डिंग टू मिश्रा जी एंड शर्मा जी, 0 and 10, क्या व्हाट आई एम गेटिंग 0 and 10। ठीक है, क्यों आ रही है 0 और 10? क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, इट्स द मेमोरी फॉर स्टैटिक, इट्स द मेमोरी फॉर नॉन स्टैटिक वेरिएबल, it's the a value, it's v value. Okay, and it's the non-static, it's the static variable. So when I will call first time, when I'll call first time, what will happen? Memory will create, memory will create for a value. Okay, for a value variable and v value. First time we are calling, what we are doing, we are assigning some value. We are writing 10, v is equal to 10, a is equal to 10. Okay, now what I'm doing, again I'm calling second time, again I'm calling second time, but in second time I am not calling any method। ठीक है, जो 10 वैल्यू जो ऐड करी थी वो मेथड कॉल करा के ऐड करी थी, अब हम कोई मेथड ही नहीं कॉल कर रहे। ठीक है, तो क्या कर होएगा, जो इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल है उसकी मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मेमोरी क्रिएट होएगी, और जो स्टैटिक वेरिएबल है उसकी मेमोरी क्रिएट नहीं होगी। जो ऑलरेडी मेमोरी एक बार ही क्रिएट होएगी, पहली बार क्रिएट हुई, उसमें 10 वैल्यू ऑलरेडी है, वो 10 वैल्यू रहेगी। ठीक है, बट जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है उनकी वैल्यू चली जाएगी, न्यू मेमोरी क्रिएट होएगी, न्यू मेमोरी में 0 वैल्यू रहेगी, कुछ डेटा नहीं होएगा। ठीक है, जो पुरानी वैल्यू है वो पुरानी डेटा चला जाएगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल में नया डाटा आएगा। ठीक है, मेमोरी बिल्कुल जीरो, मेमोरी में 0 वैल्यू रहेंगी, जीरो। ठीक है, 0 डेटा रहेगा, बट स्टैटिक में ओल्ड डेटा रहेगा, वो ओल्ड डेटा डिलीट नहीं होएगा। ठीक है, अगर मैं ऐड मेथड कॉल कराता हूँ, इफ आई कॉल द ऐड मेथड, if I'll call the add method here, sc1 dot add, what we are doing, we are adding it। ठीक है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वैल्यू में 10-10 हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें? नाउ आई गेट 10 and 20 नॉन स्टैटिक में। ठीक है, नॉन स्टैटिक में पहले भी 10 था, अब भी 10 आ रहा है, क्योंकि मेमोरी दोबारा से क्रिएट हुई है, फिर 0 0 + 10। ठीक है, अब पर स्टैटिक वेरिएबल में कितना आ रहा है? 20। 10 पहले बार एग्जीक्यूट हुआ, 10 वैल्यू वहां से आ गई, दूसरी बार एग्जीक्यूट हुआ, 10 + 10 20। ठीक है, समझ में आई ये? कोई डाउट यहाँ तक? Now what I am doing, a value I am getting 10, now v value is 20. Again what I am doing, I am going to create one object for the class. sc2 dot add method, and I'm going to print the value of a. I'm executing third time.
A value, V value. So SC2 static example dot V value. All are correct. So any idea what I will get in A value and V value? Hina ma'am, Sir, just a minute, miss. Hina ma'am, any idea what I will get in A value and V value? A value will be 10 and Okay, B value will be 30 now. 30. Okay. Love, is it correct? लव केस करेक्ट है या ये नहीं? Yes, sir, correct. प्रीति मैम, इज इट करेक्ट और नॉट? Sir, I don't know. I think 20 होगा. आई थिंक 20 होएगा। ठीक है, इस बार हम ऐड मेथड को कॉल करा रहे हैं। ऐड मेथड क्या करेगा? Okay. ओ एड ठीक है, अब फिर 30 ठीक है सर. ठीक है, मुक्ता 30, sir. 30। ओके, आई एम गोइंग टू executing. Okay, now click on debug only, and here a value is 10, b value 30। ओके, जो p वैल्यू क्या है? p वैल्यू एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी मेमोरी एक बार ही क्रिएट होएगी। जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे पुराना डेटा इसमें रहेगा, वो डिलीट नहीं होएगा। और पुराने डेटा में भी, ठीक है, हम जो भी लॉजिक लिख रहे हो वो लॉजिक पुराने डेटा में ही एग्जीक्यूट होएगा। बट नॉन स्टैटिक वेरिएबल का क्या होता है? हर वेर whenever you will create the object, new memory will create and all data will remove। ठीक है, हमने मेमोरी क्रिएट करी, ए वैल्यू का डेटा ए वैल्यू में जीरो होगी, जीरो में लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ, जीरो प्लस 10, 10 डेटा आ रहा है। हर बार 10 10 वैल्यू आ रही है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में ऐड होती जा रही है, पुराना डेटा नहीं खो रहा है स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में क्या डिफरेंस है? Clear, all clear. ऑल क्लियर, गुड। मुक्ता, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्लियर हो गया? Yes, sir. Good. So I have written, can we call non-static variable in static method? No, we can't call static variable. Okay, can we call static variable in static method? Yes. Next question, can we call non-static method in static method? Any idea? So this is the same question as first one. Yes, ma'am. this is a variable, this is a method. But here I have written method. Method, the first question is about variable. Okay. Any idea? Okay, so can we call non-static method? No, it's not possible. Non-static variable as well as non-static method we can't call in static method. Okay, but we can call static method as well as static variable in non-static method। ठीक है, इंटरव्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, जावा में पूछ ले जाते हैं ये। ठीक है, और सेल्स फोर्स में भी। किसी को कोई डाउट है इन चारों क्वेश्चन में जो मैंने लिखे हैं? ठीक है, एक बार हम ट्राई भी करके देख लेते हैं। आई एम गोना क्रिएट वन मेथड, public static void sum। So we have less than 1 minute. If you can, but Okay, shall I we have try? created for 5 minutes, you can join। Okay, I have created sum
and I'm going to save it. What I'm getting error message. देखो static unexpected token static. Just a minute.